Hello students, welcome to all on my YouTube channel Civil Exam Guru. In this video, we will discuss the questions of AA exam, and this exam was conducted by Gandhinagar Municipal Corporation. गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो एग्ज़ाम हुई थी क्लास 3 की, ये जो AA एग्ज़ाम है वो क्लास 3 के लिए होता है। तो आप सभी लोगों का जो जिन लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है उन सभी लोगों का एग्ज़ाम जो है 22/5 को है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। अभी तक मैंने ऑलमोस्ट 7 लेक्चर अपलोड कर दिया है। जिसको आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। उन सभी का पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर ऊपर दे दिया है। और यदि आपको डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9974248087 पे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में 72 से बात करने वाले हैं। ट्रैफिक सिग्नल इज एग्जांपल ऑफ, ट्रैफिक सिग्नल जो है वो एक्टिव कंट्रोल का एग्जांपल है। स्टॉप लाइन रोड मेकिंग कम अंडर, स्टॉप लाइन रोड मेकिंग जो है वो किसके अंदर आता है? जो मार्किंग रोड मार्किंग है वो किसके अंदर आता है? वो ट्रांसवर्स मार्किंग के अंदर आता है। प्लांटिंग ऑफ ए ट्री अलोंग द रोड साइड इज नोन एज, उसको बोलते हैं हम लोग एम्बोरिक कल्चर। डिस्कस करेंगे काफी सारे क्वेश्चंस इसके अंदर। पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमेन इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग इज, बिटुमेन के ऊपर जो पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं उसका मेन पर्पस क्या होता है? इट इज यूज टू डिटरमाइन द ग्रेड ऑफ बिटुमेन। The value of standard axle load is considered for the flexible pavement design is 80 ton. As per the IRC 37/2018 guideline, the analysis of flexible pavement is performed based on the subgrade soil strength in terms of resilient modulus. In the concrete road, when the wheel load are transferred to the subgrade, कंक्रीट रोड के अंदर व्हील लोड जो है वो ट्रांसफर होता है सबग्रेड पे, उसको हम लोग बोलते हैं स्लैब एक्शन के द्वारा। रिफ्लेक्शन क्रैकिंग इन द रोड सरफेस इज ऑब्जर्व इन द बिटुमिनस ओवरली ओवर द रिजिड पेवमेंट। द सीक्वेंस ऑफ द बेसिक प्रोसेस ऑफ लेइंग अ प्लास्टिक रोड इज, सबसे पहले सेग्रीगेशन, क्लीनिंग एंड द श्रेडिंग। Program evaluation and review technique of a network analysis is mainly useful of, जो PERT analysis होता है, program evaluation review techniques of a network analysis is mainly useful for which purpose? Is a research and the development project. Which of the following does not represent an activity? इसमें से कौन सा एक्टिविटी को नहीं दर्शाता है? जैसे the finalization of the site. Largest, sorry, latest start of an activity is always it is greater than or equal to the latest event time of a preceding node. Security deposit deducted from the contract bill is, जो कॉन्ट्रैक्ट बिल के करते समय, कॉन्ट्रैक्टिंग करते समय जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, bill is refunded when the defect liability period of 6 months or one monsoon, whichever is later is over. Sinking fund is a fund of use for rebuilding a structure when its economic life is over. Sensitivity analysis is a study of, सेंसिटिविटी एनालिसिस जो है वो किसकी स्टडी होती है? चेंज इन द आउटपुट ड्यू टू द चेंज इन द, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स आर कवर फॉर द प्रोजेक्ट नेटवर्क एनालिसिस? पहला और दूसरा होता है क्रिटिकल पाथ मेथड और प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक। इन दोनों का नेटवर्क एनालिसिस के अंदर यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट टू द डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ इन द PERT? PERT के अंदर relate determination of critical path in PERT analysis, it is event oriented slab. In the critical path method of project planning, free float can be greater than the independent float. Systematic measurement and the evaluation of a way
in which an organization manages its health and the safety program against a series of the specific and attainable standard is called as a safety audit. Pradhan Awas Yojana Gramin has a mandate to provide financial assistance for the construction of dash house in the rural area. कितना financial assistance? 1 crore. Which of the following ministry or ministries has contributed to the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana? फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों से मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. लिमिटिंग ग्रेडियंट ऑफ ए रूरल रोड इन द प्लेन एरिया इज. प्लेन एरिया में रूरल रोड का जो लिमिटिंग ग्रेडियंट है वो कितना होता है? 1/20. फॉर द स्ट्रेंथिंग द रूरल डेवलपमेंट द रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री recently launched a new portal named as under the Bhuvan, which will facilitate planning of new Manrega asset using the remote sensing of GIS system is Yukdhara. The order of booking dimension is length, width, and height. Pick up the item of the work which is not included in the plinth area estimate, the country yard site. Brick wall are assumed in the square meter if the thickness of the wall is 10 centimeter. In the long and short wall method of estimation, the length of the long wall is the center to center distance between the wall and half width of the wall on the each side. The concrete work for the determine following component of a building of a specified thickness is measured in the square meter. Roof, root slab, floor, DPC and wall panel. तो आंसर चारों सही है. Which of the following cost is not included in the rate analysis of the item? Land cost जो है वो rate analysis में include नहीं होता है. Purpose of the rate analysis is to rate analysis का purpose क्या है? Determine the market cost of an item. When an over when an offer with certain terms and conditions is given in the written form, it is known as a tender. When the tender is available to only limited number of the contractor to fill up the such a tender is called as a selected tender. Which of the following is not included in the tender document? Contract agreement, special terms and conditions, approve the drawing. पहला जो है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट. What is the full form of EMD? अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट. EMD का पूरा नाम क्या है? EMD का पूरा नाम है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट. Analyzing and separation of the comparative statement of contractor is done at which stage process of the tendering? Scrutiny of the tender. Original cost of the property minus depreciation, that is known as a book value. Excess of the silica make the brick brittle on the burning. Timber can be made fire resistant by Sir Abel process. टिम्बर को फायर रेजिस्टेंस बनाने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं दैट इज सर एबल प्रोसेस. The mass of the four box compound present in the cement in the descending order is. Descending मतलब सबसे बड़ा C3S, C2S, C3A, C4A. Which of the following statement regarding the cement fineness is not correct? Fine cement flow shows a faster rate of the heat of evolution and total quantity of the heat evolved is much larger than the coarse cement.
property of a material by virtue of which a body return to its original shape after the removal of the load is known as, that is known as elasticity. Size of group 1 type coarse aggregate is, ग्रुप वन टाइप कोर्स एग्रीगेट का साइज कितना होता है 12.5 mm से 20 mm. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड फाइन एग्रीगेट क्रस्ट सैंड. स्टेटमेंट वन स्लम्प कोन apparatus 100 mm, टॉप डायमीटर 200 mm, बॉर्डर डायमीटर एंड हाइट इज 350. तो ये गलत है. स्लम्प टेस्ट हेल्प इन क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग द सेटिंग टाइम ऑफ द कंक्रीट. दोनों गलत है. बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स. इसका हाइट कितना होता है 300 mm होता है और यूज फॉर द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट नॉट सेटिंग टाइम. Concrete cured at the high temperature initially lead to the lower early strength. Curing is a process that facilitates the hydration. स्टेटमेंट वन जो है वो फॉल्स है. स्टेटमेंट टू इज जो है. Statement 1. Characteristic strength of the concrete is normally defined as a strength that is likely to be exceed 95% of the time. Okay. If the it if instead of allowing 5% of the sample fall below the characteristic strength, 10% of sample are allowed to fall below the characteristic strength, design strength of the will be higher. तो पहला सही है और दूसरा गलत. Quality control of a concrete construction is usually based on the strength test carried out of the age of 28 days. The strength development in the concrete is completed in about a month. Statement 1 is true and statement 2 is false. If in an application higher ultimate strength is desired, then which of the compound is most suitable? यदि higher ultimate strength चाहिए तो कौन सा compound ज़्यादा यूज किया जाता है? तो cement that has a higher value of C2S. If the specific gravity and bulk density of the coarse aggregate are this and this, then void content in the sample used for determining the bulk density would be. स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है और बल्क डेंसिटी दिया है. देन void content in the sample used for determining the bulk density. Answer will be 40%. That is responsible for the grey color of cement, iron oxide. सीमेंट के ग्रे कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो आयरन ऑक्साइड. Pyramids are the example of dash masonry. Pyramids are the example of dry stack masonry. तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त. नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग.